The writer is by nature a dreamer, a conscious dreamer. What a true thought! We at Dr. BMN College of Home Science, in our first ever intercollegiate national level fest, which we proudly call Akansha 2020, have organized an event which reflects the quote. How, you may ask? Well, that's because the event consists of various writings under the literature category. I am Sakshi Shetty, a proud student of Dr. BMN College of Home Science, here to announce the results for our various events under the literature category. Without further delay, let's cut to the chase and begin with the announcements. The results for our very first event, that is Story Writing Hindi and Essay Writing Hindi, is judged by Mr. Sakpal sir. Mr. Krishna Sakpal. Education qualification includes MA B.Ed in Hindi. Sir is a very well writer and has published many poetries and one-act play scripts to his name. Few of them are Janmadata, Paus Paus, Maechi Sauli, Pani Vatswa, Jivan Fulwa, etc. We are extremely proud to have such a talent as our judge for this event. मैं कृष्ण संकपाल, स्टोरी और एसे राइटिंग कंपटीशन का निर्णायक। मैं आज डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे आज यह सुनहरा मौका मिला है। छात्रों ने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से प्रकट किए हैं। इन छात्रों के विचारों को परखने का मौका मुझे मिला है। सभी छात्रों ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किए हैं। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब प्राइज़ बताने जा रहा हूं। एसे राइटिंग हिंदी का फर्स्ट प्राइज़ मिला है पलक माड़िक फ्रॉम SM सेट्टी कॉलेज। सेकंड प्राइज़ मिला है सोनालिका गुप्ता फ्रॉम डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस। और स्टोरी राइटिंग में उम्मीद को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। नाम है पलक माड़िक फ्रॉम SMS सेट्टी कॉलेज पवई। सेकंड प्राइज़ मिला है वादियों में कैद रूह, नाम वैशाली गुंबर, DD जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना। सभी छात्रों को फिर एक बार धन्यवाद। Congratulations to the winners. Next are the results for Story Writing English, judged by Ms. Elizabeth Parmar. Ma'am is associated with British Council India for handling various programs for schools and colleges in communication skills. She has also been to UK for official projects and is associated with an NGO for senior citizens and occupational therapy. She has around 20 years of experience in English language skills and communication skills. It's our pleasure to have you with us today, ma'am. Good evening, everyone. I'm Elizabeth Parmar. I work with the British Council and I'm a part of the English Language Assessment team. I want to tell you how grateful I am to the contest organizers of Dr. BMN College of Home Science for allowing me to judge this creative writing story event. In spite of the current COVID-19 pandemic, they have successfully organized these events. Kudos to them. First, I would say congratulations to everyone who participated in this competition. In my opinion, you are all winners. To be honest, it was indeed a terrible responsibility to sort out winners with so many deserving stories. Reading each story and being a part of judging this competition has been a privilege and pleasure for me. But singling out a first, second and third place is a little heartbreaking because each story has its own essence. So before we declare the winners, I would like to give a couple of suggestions to all the participating story writers. Remember, you need to edit and proofread your content. You need to edit and proofread your content twice, thrice. Then that is not enough. After that, you need to get some feedback from your peers.
Feedback is extremely critical. Remember, even the best writers accept feedbacks from readers. This helps them to improvise their writing and give a better story next time. So always accept feedback from peers positively. Remember, no feedback is negative. No feedback is negative ever. Now, let's go to the point of results declaration that we all are waiting for. So, the consolation prize goes to Miss Priyal Jangla from CU Shah College of Pharmacy for her story Asha. This story is about mental health, which is a very critical subject to understand in these critical days. It was worth a read. It was definitely worth a read. Then the third place goes to Miss Shikha Bajaj from Dr. BMN College of Home Science for her story Running Away. In this story, she rightly conveyed the message that running away cannot be the answer to any problems that we face in our lives. Second place goes to Miss Yashwini Shetty from KJ Somaya College of Science and Commerce for her story A Tombstone for a Name. I simply loved this story. The way she portrayed a woman as sturdy as an oak. It was awesome. It was awesome to feel like that woman. Then the first place goes to Miss Lydia P. Lalu from Leela Thakursi College of Nursing for her story titled as He Changed My Identity. I would say that this story taught me to think of the events that happened in my life as if it happened for me and not to me. So all these stories gave a lot of moral or a value or a lesson to me. So this was an amazing experience to read all the stories. I would like to congratulate all the winners for this achievement. And I would conclude to say that it was indeed a pleasure to be a part of this wonderful event of Intercollegiate Cultural Fest, Akanksha 2020. See you around, guys. Take care and stay safe. Thanks a lot. Bye-bye. Well deserved. Congratulations to the winners. On to the next event. Here are the results for Speak Out Loud, judged by Mrs. Vandana Singh. Her education qualification includes MA MPhil in Hindi. She has worked as a journalist. Ma'am has around 20 years of teaching experience in Hindi literature. We welcome you, ma'am. नमस्कार, मैं वंदना सिंह, स्पीक आउट लाउड की निर्णायक। मैं डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी बदौलत मुझे इतने सुंदर वक्ताओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। छात्रों के विचार सचमुच बहुत ही जोशीले और उत्प्रेरक थे। सभी ने बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मैं स्वयं पिछले कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। छात्रों से मेरा गहरा नाता है। आज इन बच्चों के विचार सुनकर लगा कि सचमुच हमारा देश ऐसी युवा पीढ़ी के हाथ में है जो वक्त आने पर कभी भी देश को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। होप फॉर बेटर टुमारो इस विषय पर जब ये छात्र अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे तो मन में एक आशा जग रही थी कि भारत देश के स्वर्णिम युग फिर से लौट आएंगे। सचमुच बहुत अच्छा लगा। आइए अब मैं आज की प्रतियोगिता के रिजल्ट की घोषणा करती हूँ। सभी ने अच्छा बोला, लेकिन हर प्रतियोगिता का कोई न कोई विनर होता है। ठीक इसी तरह से आज की भी इस प्रतियोगिता स्पीक आउट लाउड प्रतियोगिता के विनर रही हैं। सबसे पहले स्थान पर हैं जीनत कुरैशी, मनीबेन नानावटी विमेंस कॉलेज से। आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर हैं कैरोल एहतियार, लीलाबाई ठाकरसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तीसरे स्थान पर दो प्रतियोगी हैं, जिसमें पहली है लीलाबाई ठाकरसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से एलिन जॉर्ज और दूसरी प्रतियोगी हैं गार्गी नादिल,
DY पाटिल रामाराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेरुल नई मुंबई से। कॉन्सुलेशन प्राइज जाता है मृणाली पिलनकर को, जो साठे कॉलेज मुंबई के साठे कॉलेज से हैं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। Keep it up, guys. Moving on to our next event, quiz, and the winners are Hello guys, hope you all are doing well. This is Diya Patel with my friend Sakshi Shetty here, and today we are here to announce the results for our quiz event. So before I begin, I would like you to know that we got around 150 participants, and thank you guys so much for participating so enthusiastically. There are total 3 winners, and these winners were decided on the basis of highest score with the fastest submission. So the finalists received a link around 12:01 in the afternoon, and the link contained the quiz with 20 questions and 5 minutes as a time limit. So not taking much time, I would like to announce the results. So the results are as follows. The third place scored 19 points with 4 minutes 50 seconds. Second place scored 20 points with the time of 4 minutes 35 seconds, and the first place was scored by 20 points and 3 minutes 58 seconds. So congratulations guys for this. My friend here will announce the names of the winners, and congratulations once again. Thank you everyone. So, without taking much of your time, let me quickly announce the results. The third prize goes to Varsha Loya from the Assam Royal Global University, Guwahati, Assam. The second prize is bagged by Shubham Abhad from Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. And the first prize goes to Raj Thakkar from KJ Somaya Junior College of Science and Commerce, Maharashtra. Congratulations to all of you. Keep it up, guys. Thank you. Let's see what are the results for Poem/Shairi event, which is judged by Mrs. Neeta Upadhyay. She is presently working as a visiting faculty in Dr. BMN College of Home Science. She has been in the teaching field since past 27 years. Besides these teaching activities, she works as a freelancer for All India Radio, where she has written and narrated many stories, poems, plays, and articles. She has written a book of short stories and has authored 2 books of poems in Hindi. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. सर्वप्रथम मैं नीता उपाध्याय डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हिंदी शायरी और पोएट्री के लिए मुझे जज के रूप में नियुक्त किया। मैं BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस के ND डिपार्टमेंट में एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, कविता सिर्फ वही नहीं होती जो किताबों के पन्नों में छपी जाती है। कविता सिर्फ वही नहीं होती जो कवि सम्मेलन में पढ़ी जाती है। कविता वो होती है जो लिखने वाले के दिल से निकलकर किसी के भी दिल में समा जाती है। आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, वही बहुत बड़ी बात है। आपके विचार का मैं सम्मान करती हूँ, और बहुत सारे टॉपिक्स में आप लोगों ने अपना एक्सप्रेस किया। ये तो आपके भाव हैं, इनका मैं कभी निरादर नहीं करूँगी। लेकिन बच्चों, जब कंपटीशन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो मैंने जो आप लोगों ने कविताएं भेजी हैं, उनको देख के मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। सबसे पहली बात, मात्राओं की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। क्या है कि आपके पास समय था तो आपको प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए थी। जैसे जीने का जान बन गया, तुम्हारा का तम्हारा बन गया, तूफान का तफान बन गया। तो बच्चों, इतनी प्यारी आप लोगों ने कविताएं लिखी, लेकिन एक छोटी सी
मिस्टेक के कारण आप लोगों की कविता विजय मैं नहीं घोषित कर पाई। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी सारी गलतियां थी। दूसरी बात, स्पेसिंग। आप जब लिख रहे हैं तो आपको मीटर का और आपको थोड़ी राइमिंग हो पोएम में तो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मीटर का भी ध्यान रखना चाहिए। और कई शब्द आप लोगों ने ऐसे चिपका के लिखे हैं जिनको कि आपको खुद ही उनको सेपरेट करके लिखना चाहिए था। पैराग्राफ में थोड़ा गैप होना चाहिए और ये सब आपको पता होना चाहिए कि कविताओं को कैसे लिखा जाता है, इसकी जानकारी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ऐसे अपने विचार कुछ भी लिखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाव व्यक्त करना। और तीसरी बात, शब्दों का चयन। बच्चों, शब्द ऐसे चुनने चाहिए जो पढ़ने वालों को आनंद आए, जो शब्द उसके मन में खूब एक उत्साह सा आए। और जब आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं तो जो पाठक है उसके अंदर एक इमोशंस जनरेट करने चाहिए, चाहे वो आपकी कविता पढ़ के हंसे, चाहे वो रोए, चाहे एक इमेजिनेशन, चाहे वो एक काल्पनिक दुनिया में खो जाए, लेकिन आपके कविता ऐसे पढ़ना चाहिए उसको कि वो उसमें बिल्कुल खो जाए। तो ये कुछ कविता लिखने का एक सिलसिला जो कहते हैं कविता लिखनी चाहिए, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्पेसिंग की, प्रूफ रीडिंग और शब्दों का चयन और पाठकों को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की 2020 आकांक्षा के जो विजय हैं उनका नाम घोषित करने जा रही हूँ। और सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, पर जो जीता है उसके नाम तो हमको घोषित करने ही पड़ेंगे। तो तीसरा प्राइज आता है लीलाबाई ठाकरसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट को आकांक्षा अतुलपुराव को मिलता है, जिन्होंने इंसानियत को सबसे अच्छा धर्म बताते हुए बेहतर कल की आशा के बारे में लिखा है। दूसरा प्राइज आता है अनुष्का सोनावर को, जिन्होंने जिंदगी के इम्तिहानों के बारे में लिखा है और उन्हें कैसे जिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जाता है काराजगी फातिमा को, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ही पोएटिक अंदाज में उसके कारण और निदान दोनों का विवरण दिया है। तीनों विजेताओं के साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पार्टिसिपेशन के ही वजह से ये तीनों विजयी बन पाए। थैंक यू गर्ल्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप राइटिंग एंड रिमेंबर, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। सो डोंट गिव अप योर राइटिंग हैबिट, स्टे हेल्दी and safe. Once again, like to repeat the winners along with your college names. The third prize goes to Akanksha Atulpura from Leelabai Thakrese College of Nursing. The second prize goes to Anukesh Sonavne from Terna Engineering College. And the first prize goes to Karazgi Fatima from Bansangas SM Shetty College. Congratulations to all of you. We now move towards our English essay results judged by Ms. Madhubala and Ms. Meena Chheda. Ms. Madhubala is currently working as English teacher in Jai Hind College, and ma'am has an experience of nearly 20 years in teaching field. Speaking about the other judge, Mrs. Meena Devraj Chheda is presently working in Smith S.T. Mehta Women's Junior College as lecturer. She has around 21 years of teaching experience. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. The winners for English essays are as follows. The consolation prize goes to Reena Poptani from Dr. BMN College of Home Science. The third prize goes to Aileen George from Leelabai Thakrese College of Nursing. The second prize goes to Deepa Mathur from Leelabai Thakrese College of Nursing. And the first prize goes to Rutuja Joshi from ASS Ayurveda Mahavidyalaya, Nashik. Congratulations to all of you. Let's see the results for our next event, Poem/Shairi English and Script Writing, judged by Dr. Manju Gala. Dr. Manju Gala is a PhD holder. She is working as an associate professor in language and FC department
of Smith P.N. Doshi Women's College. She has 20 years of teaching experience. We are indeed pleasure to have you with us, ma'am, as a judge for this event. Good afternoon. I, Dr. Manjula Gala from S.P.N. Doshi Women's College of Arts, Department of Language and Foundation course. I take this opportunity to thank Dr. B.M.N. College of Home Science for organizing Akanksha Festival 2020. I thank the organizing committee members, all the staff members, all the students council members for inviting me as a judge for two competitions. One is creative writing poetry competition and the second is script writing competition. Before I announce the results for the poetry writing competition, I would like to say as a judge what I was looking. As a judge, I was looking for an element of surprise, something from different angle, something familiar but in an original way, and most importantly, still remains accessible to me as a reader. I congratulate everyone for their efforts. My compliments to all the participants, and some of them were really very good, and I hope this competition will bring a great change in their life. Now, I announce the results for creative writing poetry competition. The first prize goes to Benita D'Souza from Manibin Nanavati College, Ville Parla, and the title of her poem is Lost in Your Own Forest. Second prize goes to Sakshi Mahatra from Dr. B.M.N. College of Home Science, and the title of her poem is Hope of a Young Girl. And the third prize goes to Vaishnavi Prajapati from C. Usha College of Pharmacy, and the title of her poem is War. I congratulate all the winners. Now I announce the results for script writing competitions. For the script writing competition, the prize goes to Sangeeta Shenoy from K.V. Pednekar College, and title of her script was Anokha Milan. I congratulate all the winners, and once again I congratulate organizing committee members. Thank you. Wow! Kudos to all the winners. You guys were really great. Please note that all the participants will be receiving e-certificates on their registered email ID. Further, all the winners will be awarded with trophies and certificates which they can collect from our college once we begin with the daily norms. For all the participants outside Mumbai, all your trophies and certificates will be couriered. We are extremely overwhelmed with all your love and enthusiastic response. We take pride in thanking each one of the participants and look forward to see such participation in all our various events in the future. Thank you. Stay safe.